अक्सर आपके सीनियर्स ने भी बताया होगा कि थर्ड ईयर इज योर हनीमून फेज, बट इज दैट द रियलिटी? गॉन आर द डेज अब हम आपसे माइक्रोस्कोप छीनेंगे और अब हम उनको ट्यूनिंग फोक्स पकड़ाएंगे. If you add I and ENT to it, it's like too much to do in final year. Case law based teaching, like example consent and medical practice, very very important. ये जो हम संभालने की बात कर रहे हैं थर्ड ईयर और फाइनल ईयर को, क्या ये स्टार्ट अभी से कर देना चाहिए थर्ड ईयर से ही? हेलो बच्चों एंड वेलकम टू PW Med-Ed. आई एम डॉक्टर अनुषा राठी, योर माइक्रोबायोलॉजी फैकल्टी. आप मुझसे मिले थे इन सेकेंड ईयर में हमने बहुत सारी तैयारी, बहुत सारी पढ़ाई करी. फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थोड़ा सा हेक्टिक, बहुत सारे फैक्ट हैवी सब्जेक्ट्स. अक्सर आपके सीनियर्स ने भी बताया होगा कि थर्ड ईयर इज़ योर हनीमून फेज, बट इज़ दैट द रियलिटी? हाउ विल यू इंश्योर कि आपकी तैयारी में आप जो इतना आगे आए हो, हाउ टू मेंटेन दैट स्ट्रीक? तो उसके लिए हम आपके लाए हैं अमेजिंग थर्ड ईयर फैकल्टीज विद द सुश्रुता बैच. So एक एक करके I am going to call all the amazing faculties that we have lined up for you for third year. First up, I have with me Dr. Sanchit sir. Dr. Sanchit is an MBBS and MS in ENT head and neck surgery, and he's a gold medalist at that. Sir has authored various textbooks and has 5+ years of experience. Welcome, sir. Thank you very much. And you know, it feels so nice to welcome उन बच्चों को जो अब आपसे हमें ट्रांसफर हो रहे हैं फ्रॉम द नॉन क्लिनिकल साइड टुवर्ड्स द क्लिनिकल साइड. और ये हमारे लिए सबसे अच्छी बात है बिकॉज दिस इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ एक्सपोजर टू अस. अब यू नो गॉन आर द डेज अब हम आपसे माइक्रोस्कोप छीनेंगे और अब हम उनको ट्यूनिंग फोक्स पकड़ाएंगे, उनको ऑप्थेल्मोस्कोप पकड़ाएंगे, एंड वी आर गोइंग टू सॉल्व आउट दोज मिस्ट्रीज जो एक थर्ड ईयर का बच्चा चाहता है. राइट सर. सो zoomed in व्यू से एक लाइफ का व्यू. ग्रेट सर. एंड हु बेटर टू हैंड देम ओवर टू यू देन टू यू. The next faculty I would like to call is Dr. Sudha ma'am. Who doesn't know her? She's an MS ophthalmology from MAMC, Maulana Azad Medical College. She has more than 15 years of practice and teaching experience, and she's the author of the bestseller book, Self-Assessment and Review of Ophthalmology. Welcome you, ma'am. Thank you, Dr. Anusha. And it's nice to take over the kids and to take them forward. So that's what we will be doing in this third year batch that we have. So welcome. Thank you, ma'am. Next up with me, I have Dr. Manjunath sir. He's an MD Forensic Medicine from MAMC, more than 11 years of teaching experience. He's popularly known as the FMT guru amongst the students, and he has also authored the bestseller Forensic Q. I welcome you, sir, on this platform. Yes madam, thank you. Next, we also have Dr. Ashwini sir in the team. You all know him as the famous faculty who has mentored 40,000 plus students for NEET PG and FMG. He's MD Community Medicine from AIIMS Delhi, and he has 8+ years of teaching experience. I welcome all the esteemed faculties to this stage. And ma'am, as we hand over these amazing students to you for third year, one thing that I would like to ask you, that most students believe that third year is their honeymoon period, because anyways since our time also there were less subjects that they had to tackle, and now with the ever changing guidelines by NMC there's always a confusion whether it's just 2 subjects that they have to read or so. How are you going to make this journey easier for them while also keeping them in touch with the studies, because they tend to finally relax and sit back in third year? So what is your strategy going to be? Well, the thing is that there is a confusion NMC की तरफ से कि ऑफ्था और ENT जो है वो थर्ड ईयर में होना चाहिए एग्ज़ाम या फोर्थ ईयर में होना चाहिए. बट आवर टेक इज़ दैट if you do only PSM and forensic in third year, I think that is not a good utilization of your time. And फिर final year में क्या होता है कि you have already medicine, surgery, OBG and pediatrics and the allied subjects. And on top of that, if you add I and ENT to it, it's like too much to do in final year and too little to do in third year. तो third year में हमारे हिसाब से we have to follow the old pattern. That's what makes more sense to me, कि हम आई और ENT को थर्ड ईयर में ही अच्छे से ख़त्म कर लें, एग्ज़ाम रेडी हो जाए, and that then 2
subjects are already done, and that's how we are also planning it out in our Susrut batch. We will be doing, Dr. Sanchit and me, we will be doing IE and ENT in third year only, just the way it is to be done for university exams, and also with an orientation as to how these subjects are to be handled for NEET PG. Amazing, ma'am. So, ma'am, we have worked very hard with these students in second year, and now I'm getting very nice, good vibes from you, and I know that I'm handing them over to great hands, and I'm sure you have many, many surprises planned for our students. So now I will hand over the baton to you, and please continue from here. Thank you so much. So hello dear medical students, welcome you all to third year. अब थर्ड ईयर आ चुका है, हनीमून फेज, बहुत लोगों को ये लगता है हनीमून है, पर क्या ये एक्चुअली हनीमून है? I don't think so, because this is a time to utilize. इसको utilize करेंगे तो ही NEET PG का जो preparation है वो ठीक से चलेगा. So और वो पहाड़ जैसा जो फाइनल ईयर सामने खड़ा हुआ है, उसको और बड़ा पहाड़ ना बनाने के लिए थर्ड ईयर बहुत इंपॉर्टेंट स्टेपिंग स्टोन है. आई ऑलवेज से थर्ड ईयर को अगर आप यूटिलाइज करते हैं तो इट्स नॉट ओनली अबाउट द प्रोफेशनल एग्जाम्स, इवन इट इज अ रैंक डिसाइडर in your NEET PG and INI-CET as well, because you start early. बिल्कुल. As you've rightly said, final year में already जो बड़े बड़े subjects हैं, medicine, surgery, OBG, pediatrics and allied, ये सब कुछ है ही. So that's why it's important that in your third year, when you have time, do not just focus on PSM and forensic. Finish off IE and ENT in this year only. And to help you do that, we have this Susruta batch that is exactly aligned on this vision that we have. Absolutely. So now Sanchit sir, please let us then discuss what we are going to do for these kids in the Susrut batch. So ma'am, बहुत कुछ है. There are a lot of things all of us have done, and the main, the focus is कि we have to make the child better. We have to make the student better, not only theoretically but also practically. क्योंकि अभी तक whatever you are reading is more of theory stuff. I think you already have been given a very good foundation from the first and second year faculties. तो अब बात आती है नॉन क्लिनिकल से क्लिनिकल साइड में एंटर करने की, आपको वेलकम करने की, एंड ऑल्सो वी नीड टू टीच यू अबाउट हाउ टू अप्रोच समथिंग, बिकॉज मोर ऑफ एन अप्रोच बेस्ड क्वेश्चन है. अब अभी आपने पढ़ा है, बट मोस्ट ऑफ द थिंग्स यू वुड बी वंडरिंग कि मैंने ऑर्गेनिज्म पढ़ा, वो कहाँ अप्लाई करेंगे, या मैंने डिजीज अभी तक नहीं सुनी थी, ये जो मैंने एनाटॉमी पढ़ी ये सर्जरी में आ जाएगी. सो दिस इज समथिंग वेयर थर्ड एंड फोर्थ ईयर प्ले अ रोल, linking that gap between non-clinical and clinical branches. So what we have come up to you is a surprise, and that is one thing, or a one-stop solution of PW Merit, which will make you extremely well in your third year. We've been covering a lot of things. बहुत सारी confusions भी होती हैं medical colleges में कि ENT और opthal कहाँ पे पढ़ना चाहिए, but as far as we have discussed, as far as we follow, हम हमेशा ये कहते हैं that third year is something where 2 subjects are too less to read. तो पुराने what we have been following till now, वैसे ही in Sushruta 3.0 we've been featuring 4 subjects, 4 important subjects, जिसमें there will be ophthalmology, ENT, forensic medicine as well as community medicine. और हम इसी तरीके से कोशिश करेंगे कि that within this year you finish these 4 subjects, ताकि वो पाइलॉन ना बने when you enter in your final year, because मैम ऑलरेडी बहुत सारी चीजें हैं सर, आपको भी पता है कितनी सारी चीजें पढ़ने के लिए in final year. तो हम लोग इसी में खत्म करते हैं, we make them strong, and ये एक stepping stone बनाएंगे so that in final year they are all ready to bounce back. Okay, so what is this Sushruta 3.0? This is something I'm going to tell you. ये एक live batch है of PW Merit, and हम सारे third year की faculties आपको live पढ़ाएंगे. Each and every topic of third year will be taken by each and every faculty at a particular time, and आपको एक calendar दिया जाएगा. Your calendar will be followed weekly. उसमें लाइव क्लासेस की टाइमिंग होगी, आप लाइव क्लास अटेंड करेंगे, एंड दे विल बी जस्ट लाइक एक लाइव लेक्चर होता है, आप कभी भी अपने डाउट्स अपने टीचर से पूछ सकते हैं. बिकॉज आई थिंक सर डिफरेंट लोगों की डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज होती हैं. बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको रिकॉर्डेड लेक्चर्स जब वो देखते हैं उनको बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं समझ में आते हैं. सो इजंट इट वेरी हेल्पफुल टू हैव समथिंग व्हिच इज लाइव जहां वो तुरंत पूछ सकें? Live lectures are always good because they can interact with the faculty, they can solve their doubts.
And also, like in this Susrut batch, we have certain other features also. We have this feature of daily practice problems. जिससे the daily practice questions है, at the end of each session there is a set of questions जिससे आप खुद को जज कर सकते हो कि हाँ ये मुझे समझ में आया, ये मुझे नहीं समझ में आया. तो अगर जो नहीं समझ आए तुम अगले क्लास में जाके टीचर से पूछ लो. So it's going to be very interactive. On top of that, there is also a Telegram community where we provide support. And as Dr. Sanchit has been saying, we start from the basics. जैसे when sir is teaching, he will maybe start from the basic anatomy of the ear, take it forward, and we try to take it to a level where you will be even able to answer the NEET PG and INI-CET questions. So it is going to be a stepping stone for you for your NEET PG preparation also. Third year के subjects और university level के लिए तो हम कर ही रहे हैं. At the same time, we ensure that you come on track for your NEET PG. So that is what. And of course, Dr. Sanchit, let's talk about the notes जो हमने बनाए हैं this year. मैम जैसे हम लोग बात करते आए हैं, there's a very there's not a distinction that is there between प्रोफेशनल एग्जाम्स एंड नीट पीजी बच्चे के माइंड में आज के Correct, दिन पे. correct. तो होता क्या है, एवरीबडी जस्ट रन्स बिहाइंड नीट पीजी INI-CET राइट फ्रॉम फर्स्ट टू सेकंड ईयर. और उनको लगता है द फाउंडेशंस आर नॉट दैट इंपॉर्टेंट, हम वो चीजें पढ़ते हैं जो इंपॉर्टेंट होती हैं. बट अनफॉर्चुनेटली इंपॉर्टेंट मेडिकल साइंस में ऐसा कुछ भी नहीं है दैट समथिंग इज इंपॉर्टेंट और नॉट इंपॉर्टेंट. एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर योर बेस, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर योर फाउंडेशन. एंड तभी ये इंपॉर्टेंस आता है वेयर यू गेट दीज लाइव क्लासेस, जहाँ पे हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे. ऐसा कि मतलब यू फ्रॉम ए ऑफ ENT और ए ऑफ ऑफ्थल्मोलॉजी, वहां से वी विल बी स्टार्टिंग एंड वी विल गो टू द एडवांस स्टफ as we proceed forward. And also we make it a point that we will include the latest updates also. Like for example, जैसे in forensic there has been such a lot of change in the past 1 year or so. So Manjunath sir, so how would you be incorporating that in your lectures? हमारे बच्चों को बताइए. So in 3.2, I have made 5 major changes, and same thing I incorporate in Sushruta batch as well. The first very important thing is the BNS, BNSS and BSc. It's entirely updated version. And second thing, my teaching basically it is case law based teaching. Like example, consent and medical practice, very very important. So during my live lectures as well as in 3.2, I discuss case laws. Like example, Samira Koili versus Dr. Prabha Manchanda. It's a landmark judgment given by Honorable Supreme Court, like that. And second thing, most of my classes based on post-mortem demonstration. Like example, drowning. So I do discuss the entire concept with the case of drowning, showing cadaveric spasm and other findings. What is the cause of death? That is asphyxia. And one more thing I included is the forensic mystery. Like example, cafe coronary syndrome, very commonly asked, short essay, very commonly asked in NEET PG exam. So there will be some demonstration like this. Like example, cafe coronary syndrome. It's a classical case of vasovagal inhibition and death. In this case, basically, the person will be having alcohol. At the same time, you'll be having some solid food. So, like example, one very famous case is banana syndrome. So, in that, the foreign body which lodged in the larynx and causing stimulation of vagus nerve and death. So like that, I included many forensic mystery cases just to make subject very interesting, and also it is very helpful in their theoretical exam as well as entrance exam. And one more thing I added is all the practical competences. Like example, how to write death certificate, how to write injury certificate. All these are medical legal documents, and as a doctor you must know how to write all these practical competences very well. And the last thing, at the end of each chapter in Sushruta batch as well as the 3.2, I have made some 10 MCQs, that discussion at the end of each lecture basically. So these changes I made in 3.2 as well as in Sushruta batch. Amazing, sir. So amazing. And So I always used to feel कि forensic मेरा weak subject था. हाँ. Had anyone taught me such This kind way, of ways exactly. in forensic कि मुझे कोई mystery दिखाता या मुझे कोई ऐसे बोलता कि you solve this out. This is what creates. This is what we have been creating. This is what we have different ways of creating things for you. So that
it is easier for you to grab. So, I mean, I think they're very lucky, and this also explains why Manjunath sir is called FMT Guru. I mean, giving this kind of a twist to a subject like forensic, which students actually dread, is, I think, sir, आपने बहुत ही unique feature इसमें include किया है, and I'm sure that all of you will enjoy it and you will fall in love with the subject, as you should. So this is the purpose of this batch. We will try to make things interesting. We will also start from the basics. We will try to make you competent. So see, we'll try our best, and we hope that you will also put in your best, because जैसे कहते हैं ना, ताली एक हाथ से नहीं बजती है. So we'll all try and we will work towards becoming better doctors. And one more thing, in last NEET PG exam, they asked around 10 questions from forensic medicine, and most of them are directly from our notes and from the Sushruta math lectures. And forensic medicine is most interesting, as well as it is more scoring also, that you can complete in 2 weeks after attending our live lectures and 3.0 videos. और सिर्फ इतना ही नहीं होता, हम लोग सिर्फ पढ़ाते ही नहीं है. एट द सेम टाइम, एक्सेप्ट फॉर नर्चरिंग, एक्सेप्ट फॉर दोज हैंड होल्डिंग सेशंस, वी गिव यू फाइनली जो आप सबकी फेवरेट होते हैं, गुड नोट्स. तो नोट्स एक ऐसी चीज है जो सब लोग ढूंढते हैं, पर यहां पे आई वांट टू एम्फसाइज वन इंपॉर्टेंट फैक्ट टू ऑल ऑफ यू. यू आर एंटरिंग इनटू क्लिनिकल साइंसेस. यहां पे सबसे पहले अपने दिमाग से फोमो हटा दो. फोमो हटाने का क्या मतलब है? यू कैन नॉट बी अ मास्टर ऑफ एवरी टेक्स्ट बुक. You cannot have all sorts of textbooks lying around और आप कहोगे मैं सब कुछ पढ़ लूं. Our faculties have curated these notes after getting those resources from various textbooks, and it is all in one place. ये notes में what we have given is not only what is written in different textbooks, it is our personal experiences. There are clinical photographs, there are flowcharts, there are mnemonics, there are handmade diagrams. Correct. Which have been given by all faculties, जो आपको नहीं मिलेगा in any other textbook. That is what makes PW Merit Notes a little different from others. Of course. So our notes, our live classes, our hand-holding sessions, and our doubt-clearing sessions, our twist in forensic medicine, and also what should we say about our PSM faculty? Like, he is, all of you know him, Dr. Ashwini. He takes PSM into a different league altogether. So all this together is going to make our Sushrut batch really very, very special. So it's fun and entertaining at the same time. Bilkul. Fun, entertaining, and also well directed and useful. So it's a mix of everything. So आप नीट पीजी और INS-CET की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको बस एक ट्रेंड फॉलो करना है जो आपको बताया जा रहा है, उसी के साथ चलना है, एंड आई थिंक यू विल सेल थ्रू इजीली. एंड व्हेन यू एंटर इन योर फाइनल ईयर, उससे ज्यादा आपको कुछ चाहिए ही नहीं होगा. विद दिस नाउ, अब हम कुछ और आपको इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, कुछ और आपके लिए जो आपके लिए बेनिफिट करे. एक बहुत कॉमन क्वेश्चन ये आता है कि हम फाइनल ईयर के सब्जेक्ट्स कब स्टार्ट करें? मेडिसिन है, यू नो, देयर इज सर्जरी, उसमें भी बहुत सारी चीजें हैं, और उन चीजों को देखते हुए हमें कब स्टार्ट करना चाहिए? बिकॉज ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है. Clinical postings will already start, and it's quite an overwhelming, you know, thing or a feeling for a child कि suddenly second year के बाद मुझे इतना लोड कर दिया, मैं मेडिसिन में जाऊं, क्या करूं? I am lost. सर्जरी कितनी पढ़े, और फाइनल ईयर के सब्जेक्ट्स हमें कितने पढ़ने स्टार्ट कर देने चाहिए right from third year? Correct. So for this, we'll invite our final year faculty, Dr. Santosh, Faculty of Medicine, and Dr. Era, Faculty of Psychiatry. So they will give us an insight into this. Welcome sir, welcome ma'am. Hi sir. So welcome Santosh sir, welcome Hi, Ira sir. ma'am. Thank you. You know, I want you all to get familiar with your medicine and psychiatry faculty as well, क्योंकि जब आप थर्ड ईयर से निकलेंगे तब आपको संभालेंगे योर फाइनल ईयर फैकल्टीज. बट एक क्वेश्चन आता है, Yes sir. ये जो हम संभालने की बात कर रहे हैं थर्ड ईयर और फाइनल ईयर को, क्या ये स्टार्ट अभी से कर देना चाहिए थर्ड ईयर से ही? Third year is the sweet point because आप path and pharma से fresh हो. अब मेडिसिन है क्या? 50% path pharma ही है. Just applying it to the diagnosis and following the guidelines for management. But majorly it is based on physiology, pathology and pharmacology. तो fresh हो आप अभी से farm and path से, तो it is more easier to start now. अगर आप path, pathology और pharmacology उड़ने के बाद रीस्टार्ट करेंगे तो you need to begin from the very basic, literally scratch से start करना पड़ेगा. So third year is the right time. दूसरा क्या है, थर्ड ईयर में मोस्टली यू विल स्पेंड 30 to 45 डेज मेडिसिन बेडसाइड पोस्टिंग, डिपेंडिंग ऑन आप कौन से यूनिवर्सिटी में हो, 30 डेज या 45 डेज. एंड ड्यूरिंग दैट पीरियड यू आर ऑल्सो गेटिंग एक्सपोज टू पेशेंट्स. आप डिसीजेज देख रहे हो, सो यू कैन मैच इट विथ योर स्टडी. दैट वे यू विल बी एबल टू रजिस्टर थिंग्स बेटर एंड रिमेंबर फॉर लॉन्ग. सो थर्ड ईयर इज़ द राइट टाइम टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग. ऑफकोर्स पूरा मेडिसिन थर्ड ईयर में नहीं हो सकता है.
नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल बिकॉज आप लोग ऑलरेडी ENT एंड ऑफ्थाल भी थर्ड ईयर में डाल रहे हो अपार्ट फ्रॉम PSM एंड FMT. तो पूरा मेडिसिन नहीं हो पाएगा, बट यू कैन चूज लाइक आउट ऑफ 8 मेजर systems in medicine, you can choose 2 or 3 to finish in the third year itself, ताकि you're already unburdening yourself for the final year. हेड स्टार्ट हाँ, दे देना है. and more importantly आप bedside posting पे हो ना, तो CVS, abdomen and RS are the commonly discussed cases. So these 3 systems you can comfortably finish in the third year itself if it comes to medicine. मैम आपका क्या ख्याल है, साइकियाट्री भी थर्ड ईयर से स्टार्ट करना सही रहेगा? Absolutely. I think the sweet spot of having some break from extremely heavy stuff. Psychiatry is fun, and we've made it even easier for you. The notes that we have, you can go to your clinical posting, relate to it, and cover up psychiatry in the third year and the remaining in the final year. क्योंकि कुछ posting जैसे आप कह रहे थे थर्ड ईयर में होती है, कहीं पे फाइनल में होती है. So correlate everything. Finish your psychiatry, your derma, your short subjects can be covered in the sweet spot of honeymoon period as well. And definitely then you'll have a head start even for the final exams and even for the NEET. और शॉर्ट सब्जेक्ट थोड़ा रिफ्रेशिंग भी होता है कि बीच में सडनली बोर हो गए तो यू रीड समथिंग विच इज मोर इंटरेस्टिंग. तो हमने कुछ साइकियाट्री पढ़ ली तो उससे हमें एक नया रिफ्रेशमेंट मिला, कुछ एनेस्थीसिया पढ़ ली, डर्मैट पढ़ ली. ग्रेट. मैम एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह पे ये सोचने में आता है कि आपने जितनी टेक्स्ट बुक पढ़ ली आप बहुत बढ़िया डॉक्टर बन जाएंगे, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं होता. It's not only about theory, it's also about skill, it's also about practice, it's about certain things which you also have to learn during this phase except for textbooks. So do we have something to offer to them regarding skills? Yes, this is like something which is very unique, and we have these skill videos which we have incorporated. Like some things you will be able to see in your postings, kuch cheezein shayad you will not be able to see, but we have tried to compile them in our skill videos. Jaise for ophthalmology, the basic OPD instruments, how to use them, what is the use of, what is the indication, what are the basic surgical instruments that we use in cataract surgery. ये सारी चीज़ें I have recorded as skill videos in my clinic, and we have done the same I think for other subjects also. जैसे we have done it for ENT, we have done it for medicine. Medicine is an ocean, so you will not be able to see everything, but much of it which you will not be probably able to see in your postings, Dr. Santosh will record in the videos. And first year second year के dissection videos, lab videos तो हैं ही. So like we are not just trying to teach you theory जो practical में भी आना चाहिए, not just to pass the exam but also to be a more proficient clinician. We have tried to incorporate that into the app. मतलब मैम आप ये कह रहे हैं कि अगर मैं ऑफ्थल्मोलॉजी पढ़ रहा हूँ और मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती कि स्लिट लैम्प एक्चुअली कैसा दिखता है, आप मुझे दिखाएंगे? Yes, that is the idea, because we know that in all colleges maybe clinical postings may not be that I mean, especially in micro subjects, it may not be that easily. All instruments may not be accessible to students. There may not be that many instruments available in the department itself. So this is an endeavor from our side to show them the basic stuff We that are they taking should away be. the rote learning culture, Yes. and we are coming back to the traditional Yes. ways of teaching, जैसे पढ़ाई करनी चाहिए. And also like in a subject like medicine, like a clinical, how to do a general clinical examination, how to look for pallor, icterus, like which every medical student should know. So I think we'll incorporate all that. We are already done many, and we will keep on adding to it. Great. Santosh sir, can we build up something for them ताकि उनकी जो एक अंदर से आती है ना कि नीट पीजी INI-CET ऐसा तो नहीं हमारा कहीं रह जाएगा, हम प्रॉफ के लिए पढ़ते रहेंगे. सो डू वी हैव समथिंग टू टेल देम अबाउट कि थर्ड ईयर से लेके फाइनल ईयर तक क्या हम उनको कुछ दे सकते हैं दैट दे विल बी हैप्पी अबाउट इट? So of course, जो प्रॉफ के लिए पढ़ते हैं, that can be easily extrapolated to the NEET PG, because knowledge at the end of the day is knowledge, highly useful for NEET PG. And in fact आजकल प्रॉफ की preparation is more relevant for NEET PG than the NEET PG preparation itself. क्योंकि पहले क्या होता था, बस MCQ पॉइंट्स रट के जाते थे and we used to solve the questions based on that. अब क्या हो रहा है, every question opens with a story. किसी पेशेंट की कहानी है, आपको पहले कहानी से डायग्नोसिस करना है, उसके बाद ही आप MCQ को आंसर कर पाओगे. And all that is what you're learning in the bedside teaching. That's what you're learning in the ward posting. That's what you're learning in the prof exams. So if you join with us from the third year, we assure you that we are going to hold your hand till you crack your NEET PG, and you will be on this podium celebrating your success. So for that, we have the master plan. More on that you can throw lighter. मास्टर प्लान, अब इसका नाम ही मास्टर है, सो ऑब्वियसली आपको सेल करेगा राइट फ्रॉम योर थर्ड ईयर एंड टिल द टाइम यू क्लियर योर नीट पीजी एंड INI-CET. Our master plan has got many things to offer
ये आपको देगा एक्सेस टू ऑल आवर लेक्चर्स प्रेजेंट ऑन द ऐप। इसके साथ आता है हमारा फुली लोडेड पावर पैक्ड क्यू बैंक। हमारे क्यू बैंक में है 17,000 प्लस क्वेश्चंस which are not only the previous year questions but also the previous year topics which I've covered, and also the possible questions around each topic which can be a possible question in your coming NEET PG and INI-CET as well as FMG exam. उसके साथ यहीं पे बात खत्म नहीं होती। We have also got an extensive test series जो सिर्फ आपके सिर्फ सब्जेक्ट वाइज टेस्ट नहीं है, but they also are important grand test, जिसको हम लोग ऑल्सो वी कॉल इट एज अ प्रिडिक्टर जीटी, जिससे बहुत सारे क्वेश्चन हमने ये देखे कि इस साल के FMG, INI-CET एज वेल एज नीट पीजी एग्जाम में आए। अब हमेशा एक फोमो होता है कि मैं पोस्टिंग्स में क्या करूंगा। सो फॉर योर पोस्टिंग बडी वी हैव क्रिएटेड अ क्लिनिकल कॉर्नर व्हिच विल टेल यू ईच एंड एवरीथिंग अबाउट हाउ टू टेक अ हिस्ट्री एंड डू अ करेक्ट एग्जामिनेशन। We also have got, as Sudha ma'am said, skill videos which are attached with clinical subjects, जिसमें आपको पता चलेगा that how to actually master a particular skill of that particular area. And finally, with this, हमारे साथ हमेशा हमारे मेंटर्स खड़े रहते हैं। So we have got hand-held sessions, जिसमें हम हमेशा आपके साथ, whenever you have got any problem, कभी भी आपको, you have to tell us. So we have got an exclusive Telegram group for that, where you can ping us any particular point of time, tag us, and you can ask any questions wherever you're missing out on. So all of this under one roof of PW Merit. इसे हम कहते हैं हमारा master plan. So thank you so much, Thank you, dear sir. faculties, Thank for you. joining us. Thank you, sir. Great. तो अब हमें मास्टर प्लान के बारे में समझ में आ गया कि मास्टर प्लान होता क्या है। अब ईरा मैम विल टेल यू अबाउट कि मास्टर प्लान एनरोल करने के लिए क्या करना चाहिए। Super simple, guys. Just go to the app, अपना third year NEET PG cohort select करने के बाद premium plans पे click करिए. Once you are there, you will find our master plan having all 19 subjects, all for the price of, sir. और मैम ये सारी चीजें come at a very very affordable price of only 24,999. That is for 36 months. What else can you ask for after all? Absolutely, what else can you ask for? So thank you so much for joining us. This would be from the PW Merit side. Thank you.